Okay, class, in the last lecture, we were talking about the concept of depreciation, which means that the value of an asset, of basically a fixed asset in an organization, it decreases with time because of wear and tear, age, and obsolescence. And I also discussed the importance of the concept of depreciation in the organization in terms of the financial statements, which are income statement, जिसके अंदर हम कंपनी का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, एंड ऑल्सो इन द बैलेंस शीट्स में हम अपने एसेट्स की जब वर्थ या वैल्यू शो करते हैं, जिसको हम बुक वैल्यू कह रहे होते हैं, जब बुक वैल्यू शो करते हैं उसके अंदर भी डेप्रिसिएशन डिडक्टेड अमाउंट लिखी जाती है। अब डेप्रिसिएशन जो है वो एक तो नेचुरल फिनोमेना है ही, क्योंकि जो भी आप एसेट खरीदते हैं, आपके घर का भी कोई एसेट होता है, इट ऑलवेज गेट्स डिप्रिशिएटेड। सो एक तो ये है कि इट इज अ नेचुरल फिनोमेना जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करना भी चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एज अ टैक्स शील्ड। जब आप अपने इनकम अकाउंट के अंदर इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन शो करते हैं, तो उससे आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। ऑब्वियसली आप माइनस कर रहे होते हैं उसमें। जब आपका प्रॉफिट कम होता है तो उसके ऊपर जो टैक्स की परसेंटेज चार्ज होगी वो भी कम होगी। अगर 200 रुपए का प्रॉफिट है और 10% उस पर टैक्स है, तो 20 रुपीज जो है वो टैक्स बनेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है, 150 हो जाता है, तो आपकी टैक्स उसके ऊपर कैलकुलेशन 10% के हिसाब से 15 रुपीज का आप टैक्स दे रहे होते हैं। सो इस एग्जांपल से हमें पता चलता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो आपके प्रॉफिट को कम करती है, और उससे फायदा क्या होता है कि आपको टैक्स कम देना पड़ता है। एनीवेज, so we were discussing the straight line method of depreciation, which is the most basic one. और straight line का मतलब भी यही है कि if you make a line of make a graph of the depreciation charge over time, अगर x axis पे हम years ले लेते हैं और y axis पे हम depreciation ले लेते हैं, so it is going to look like a horizontal line कि हर साल आप एक ही वैल्यू डिप्रिसिएशन की अपनी इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं। इस डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी मेथड है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया था। और जब हमारे पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा तो हम ये टेबल बना लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले ईयर्स। सो पहले साल में, दूसरे साल में, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन सालों में हम डिप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर रहे हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो इस कॉलम के अंदर हम लिखेंगे। और उसको माइनस करने से हमारी एसेट की बुक वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, उसकी वर्थ पे क्या फर्क पड़ता है, वो हम इस कॉलम से शो करेंगे। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस एग्जांपल के लिए हम निकालते हैं 2 मिलियन, यहाँ पे इसकी परचेजिंग कॉस्ट है, माइनस सैल्वेज वैल्यू जो यहाँ पे 200,000 है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ विच इज 5 years। तो हमारे पास इस एग्जांपल के लिए जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना चाहिए, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, लेट्स कैलकुलेट इट हियर। 2 million, 2 and 6 zeros minus 200,000, 1800, sorry, 1.8 million। So 1.8 million को जब हम डिवाइड करते हैं 5 years से, so we get a value of 3,60,000 or 360,000। ये डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जो है वो एवरी ईयर जो है वो चार्ज होगा।
So let's write it here. 360, 1, 2, 3. And this value will be written for all the 5 years. ओके, अब यहाँ पे बुक वैल्यू हमने लिखनी है। पहले साल में हमने एसेट लिया 2 मिलियन का, उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं। तो 2 मिलियन माइनस 360 जो है वो कितना हो जाएगा? माइनस 360, 1, 2, 3, 164। तो पहले साल के एंड में 164000। पहले साल के एंड में आपके पास एसेट की वैल्यू जो है वो रह जाएगी 2 मिलियन से 1.64 मिलियन। इसी तरह हम अगेन ये जो बुक वैल्यू है पहले साल के एंड में, उसमें से दूसरे साल की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो इस साल के एंड में आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। सो 16400 माइनस 360, 128, 0, 0, 0, 0। सिमिलरली हम इस प्रोसेस को करते जाएंगे। 920, 920, 0, minus 360 again, we get 560, and minus 360 we get 200,000। और यही वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए थी। 5 साल के बाद ये एसेट जो है वो $200,000 की सैलवेज वैल्यू रखता है। इससे ये भी वेरीफाई हो गया है कि हमने कैलकुलेशन ठीक की है। Okay, so next we have declining balance depreciation method. This is an alternate method, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत से different methods available हैं, और ये है declining balance method। तो declining balance का मतलब है कि वक्त के साथ साथ डेप्रिसिएशन कम होती जाती है, शुरू में ज़्यादा होती है और बाद में कम हो जाती है। Means of amortizing or depreciating an asset at an accelerated rate early in life with corresponding lower annual charges near the end of service। So start में ज़्यादा depreciation और बाद में कम depreciation। तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आईफोन जब मार्केट में लॉन्च होता है तो पहले साल में सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू गिरती है और फिर टाइम के साथ साथ जो परसेंटेज डिक्रीज है वो कम होता है। सो अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंट्स ये ज़्यादा रियलिस्टिक बात है कि पहले साल में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होती है और फिर वक्त के साथ साथ डेप्रिसिएशन कम होती है। सो वी हैव दिस फॉर्मूला फॉर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है। डीसी का मतलब है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ द ईयर एन, एंड इज अ फंक्शन, डीसी इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ एन, कौन से साल की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ एन माइनस 1। इसका मतलब है कि पिछले साल की बुक वैल्यू को आप लेंगे इनटू आर। आर इज स्पेसिफिक रेट जो हम यहाँ से निकालते हैं। आर इज इक्वल टू 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई टी, एंड अंडर रूट इसका आप एन ले लेते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर। आर की फॉर्मूला को आप इसमें पुट करेंगे और फिर you can calculate depreciation charge for each year। So हम यहाँ पे ये वैल्यूज डिलीट करते हैं।
और यहाँ पे लिखते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। So first of all, we will calculate R. R कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे S डिवाइडेड बाय P। S इज द सैलवेज वैल्यू एंड P इज द एसेट कॉस्ट। इसका मतलब है सैलवेज वैल्यू हमारी थी 200,000 डिवाइडेड बाय 2 million was the purchase cost, 0.1 आ गया। और हम इसका जो है वो 5 लेंगे इसको, which is basically 1 by 5. So it's going to be 1 by 5 is 0.2, and we will subtract it by 1. So R हमारे पास 0.369 आ गया है। For our example, 0.369, let's remember this value. अब जी पहले साल की जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी दैट इज गोइंग टू बी 0.369 into the book value of the last year. So last year was 0 year, इसका मतलब है वो टाइम जब हमने उसको खरीदा है। So हमने खरीदा है उसको 2 million में। So 2 1 2 3 So ये जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट्स इज डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर फर्स्ट ईयर 738085। 738085, this depreciation charge for first year. I forgot to mention the units here, so class please remember that you must include the units. Okay, तो बुक वैल्यू हो जाएगी 2 million में से हम इस वैल्यू को माइनस करते हैं 1261914। अब इस साल की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इस बुक वैल्यू को अगेन आर से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज योर 0.369 465647 465647। नाउ यू कैन सी कि पहले साल में डेप्रिसिएशन ज्यादा थी और अब कम हो रही है। सो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का ट्रेंड नजर आ रहा है। 1261914 माइनस 465647 1261914। So now it is 796268 796268। अगेन इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे and we get the value 293823 293823। इसमें से हम इसको 796 में से 293 माइनस करेंगे so we get 502445। इसको अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.369 के साथ 185402 185402 minus 502445 317042।